ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी भारत और टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के बीच वैश्विक शिक्षा विविधता एवं समावेशी तथा सतत शैक्षिक साझेदारियों का अत्यंत प्रभावशाली बनाने के लिए एक सहयोग हस्ताक्षर हुआ। शैक्षिक आदान प्रदान संयुक्त एवं द्वैत डिग्री कार्यक्रमों का मार्ग इससे प्रस्त होगा, यह कहना था डॉक्टर राजकुमार, चांसलर ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी। दिल्ली से गुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट ओपन वॉइस। I welcome you all to this interaction with our distinguished delegation from the University of Tokyo, Japan, led by Professor Dr. She is the Executive Vice President of Global Affairs and Diversity at the University of Tokyo, and Vice President Professor Dr. Eugene Yaguchi, who heads the Global Education Portfolio at the University of Tokyo, Japan. From the last 2 years, we have made significant inroads establishing substantive partnerships with Japanese universities. We have made significant inroads establishing substantive partnerships with Japanese universities. Frugal innovation. We've had successful missions to both Mars and Moon at a fraction of the cost what it takes in a developed society, such as even United States. And so our scientists have been at the vanguard of space technology as well as other science and engineering, and hence it is also an opportunity for collaborating with Japanese universities, and that is something that is being pursued. I also think that India and Japan has been consistently ranked number one in many years and in many parameters as number one in Asia and among the top 25 universities in the world. It demonstrates the most sincere and serious commitment of Japan and Japanese higher education institutions to be able to collaborate with Indian higher education institutions. While today's collaboration and the signing of MOU might focus on two of our institutions, the University of Tokyo and the OP Jindal Global University, the spirit of this collaboration and the MOU signing ceremony and the India-Japan Higher Education Conclave, which will be followed by this press conference, is to recognize and growing relationship between both the countries. In many ways, this conclave is organized to recognize the fact that the University of Tokyo is also responsible for creating a wider set of opportunities for other Japanese universities to build collaborations across Indian universities. And also my university, as well as also Japanese higher education. Yes, as well as diversity and inclusion. But I'm also here to also say to persuade or to talk about the Japanese higher education, to promote more students to come to Japan, as Vice Chancellor Rajkumar said. And today I'm so happy to be able to conclude the MOU with the OP Jindal Global University in terms of student exchange as well as the short-term summer program. Actually, this is my fifth visit to India, so I've been here quite often in the past 3 years. But the first university I visited was the OP Jindal Global University, and from there I saw how in most instances of foreign policy, the people-to-people ties take off first, and then the governments try to catch up. That's the case with US, Canada, and the several other countries. In the case of Japan and a few other countries, the people-to-people ties are lagging behind the governments. The governments have taken the initiative. They are galloping ahead with the strategic partnership, but people-to-people ties, government to government, not government to government, sorry, university to university ties are lagging behind. So it is in that context that I'm particularly happy as an ex-diplomat, as an ex-ambassador, that the Jindal Global University, for which I have the honor of working now, actually has taken this initiative to do something about strengthening the higher education ties between India and Japan. I think it's vitally important that the governments alone cannot be left to do. Transformer period to seek degrees. Now we're establishing with OP Jindal Global Universities the first two.
we're welcoming students from OPG Global University next summer in June to come to Tokyo for 3 weeks. This is going to be a very short experience, which would hopefully lead to them coming to the University of Tokyo for a longer term, for 1 semester or 2 semesters. We now have MOU, just as our EVP mentioned. So short term, longer term, and we hope to send our students here for short term, and we are sending students to OPG Global University next fall. जो देश का प्राइम मिनिस्टर उनको एक इंडिया जापान का जो फोकस उन्होंने लेके आया, साथ में उसके रिलेटेड अलग अलग सेक्टर्स को एक नया दिशा दिया है। आप अगर देखें तो इफ यू सी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये खाली एजुकेशन सेक्टर पे नहीं है, अलग अलग सेक्टर पे जापानीज कंपनीज और कॉर्पोरेशंस का प्रेजेंस इंडिया में एक्सपैंड हुआ है। इंडियन कंपनीज हैव आल्सो एक्सपैंडेड देयर प्रेजेंस इन जापान। अलग अलग इफ यू सी इस बार जब लेटेस्ट विजिट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने अलग अलग प्रीफेक्चर्स के जो गवर्नर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग किया गया है। पूरे जापान के जो पूरे सोसाइटी के साथ एक गहरी संबंध बढ़ाने के लिए भी इन्होंने एफर्ट दिया है। मैं इन कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा, ये जो नया जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमारे बच्चों को इसको यूज करना चाहिए। ये एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। इतना एक डेवलप्ड सोसाइटी के साथ जो चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं आज के दिन में, जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को कैसे साथ दे सकते हैं, एक हिस्टोरिक एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, कल्चर है, चाहे वो रिलीजन है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ के एक आने वाले समय के लिए किस तरीके का एक सोसाइटी बना सकते हैं, ये जो चीज हम लोग को जापान से सीखना चाहिए। और ये भी हम लोग को सीखना चाहिए जिस तरीके से दुनिया का जो बड़े बड़े कंपनीज को बनाया गया है और पूरा दुनिया के साथ किस तरीके का संबंध उन्होंने किया है, ये भी हम लोग को सीखना चाहिए। तीसरी बात, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एम्फेसिस है, जो अपने जो मदर टंग, जो लैंग्वेजेस को, अलग अलग लैंग्वेजेस पे एम्फेसिस करना चाहिए, वो भी जापान से सीखना चाहिए। जिस तरीके से जापान ने इतना तरक्की पाया, उनके जो जापानीज लैंग्वेज को भी डेवलप किया साथ साथ, और उसके साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग करके उन सोसाइटी को आगे बढ़ने का एक प्रयास किया। ये सारे चीजें हम लोग को सीखना चाहिए, और हमारे जो बच्चों के लिए ये इससे बढ़िया कोई मौका पूरा दुनिया में नहीं मिल सकता है। इसलिए हम इंडिया जापान का फोकस के बारे में बात कर रहे हैं, और इसलिए ओपीजी ग्लोबल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के साथ ये MOU हम साइन किए। थैंक यू।